looks like winter is here. आज बर्फ पड़ रही है, although temperature is really good, about 0 degrees, around 0 degrees. I thought I'll just go for a quick hike. I'm just by myself. I have my backpack with me, I have my jacket, my layer with me, and I'll just go and have some fun on the trail, and I'll take you along with me. ये Murphy's Law है. मैंने कल कार वॉश लिया था और आज ये बर्फ पड़ रही है और ये पिघलती भी जा रही है और कीचड़ होता जा रहा है. I'm in line for cup coffee. अभी ड्राइव थ्रू में हूँ. यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं, फ्लास्क भरते हैं, and then I will be on my way to the trail there. ये जी कॉफ़ी मैंने ले ली है, मैंने अपनी फ्लास्क भर ली है, and now I'll go to the head of the trail. ये ट्रेल हेड है, यहाँ पे पार्क करूँगा मैं गाड़ी, and then I'll go up on the hill. और फिर वहाँ से मैं ब्रूस ट्रेल को ज्वाइन कर लूँगा, and I'll go east today. That is the plan. Let's get ready. हाथ ठंडे हो तो जैकेट भी बंद नहीं होती. Just struggling with it. Cold. Oh man. Already मैंने अपना glove गीला कर लिया, नीचे गिर गया. All right, here we go. I'm finally on the trail, and from here it just goes up and up. It's all muddy here, so I'm sure it'll be very slippery today. Trails are all right, लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये मुझे पसंद नहीं है. Like few stairs is okay. You can't beat that. Look at the beauty of the trail. Oh my, this is so pretty. As I said earlier, I'm just by myself today, just doing a quick trail. It is a Bruce trail, so I'm just doing a quick hiking, a couple hours maybe. काफ़ी दिन से hiking नहीं की. It looks like I'm a little bit out of shape. It'll be fine in a few days. I love hiking in summers as well as in the winters, or as much as in the winters. Winters में दो तीन बड़ी अच्छी चीज़ें. एक तो मच्छर नहीं होते, ट्रेल पे रश नहीं होता किसी भी ट्रेल पे. जब बिजी ट्रेल पे जाएं, दूर जाएं, नज़दीक जाएं, you'll hardly find any people there. So that gives me that opportunity to connect with my own self. Beauty, connect to nature. Temperature is good. It's really beautiful. ये भी वही बात है जो मैं always अपनी वीडियोस में कहता हूँ. You got to come out of your comfort zone, and then you start achieving, you start enjoying, you start loving nature. When you love nature, basically you love your own self, and that's what I do when I go on the trails. I'm able to connect with my own self. I can talk to myself. I can talk to the nature here. और ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है. आप अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, आप अपनी सक्सेस के बारे में सोचते हैं, आप अपने आप को बेटर करने के बारे में सोचते हैं. And this is so important that many of us, we forget to think about things which are going around us, which are happening around us, and see how to make things better, or how to make your own self better. It is extremely important, but I think it's extremely forgotten. Stay with me. I'll show you some beautiful trails today. This is the first snow today. Although temperature ऐसा है कि साथ साथ थोड़ी पिघलती भी जा रही है, लेकिन as you can see on the trees, there is some left, or that makes the trail so beautiful. My friends call me crazy, and I'm crazy to some extent, because I try to do things out of the box, not the normal way, maybe a little different. And this craze of mine, oh look at that beautiful squirrel. This craze of mine going on the trails in a bad weather, that has always stayed with me all my life. Barish ho, barf pad rahi ho, I like to go out when it's not easy to go out, and I love doing that.
अपने आप को हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्दियों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, होंठ खुश्क होते हैं, गला खुश्क होता है, सो ऑलवेज कीप वाटर विद यू। ट्रेल्स की ये ब्यूटी होती है कि आप मुख्तलिफ वेदर, मुख्तलिफ सीजन्स में जब इनको करते हैं, दे नेवर लुक द सेम, दे ऑलवेज लुक डिफरेंट। ये वाला ट्रेल मैंने बहुत दफ़ा किया हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। ओह मैन, इट्स स्लिपरी हियर, इट्स वेरी स्लिपरी। और चूँकि मुझे घुटनों का इशू, मैं अपने आज नी ब्रेस नहीं पहन के आया। आई डिडंट एक्सपेक्ट के इट विल बी मडी एट प्लेसेस। ये ट्रेल मैंने इतनी दफ़ा किया है, लेकिन एवरी टाइम आई कम इट लुक्स सो प्रिटी, इट इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। आज मैं अपना नया बैग और अपना नई जो है ये जैकेट, इट्स वाटर प्रूफ शेल, इट डजंट हैव एनी इंसुलेशन, लेकिन दिस वन इज जनरली यूज्ड बाय स्कीयर्स। तो ये पतली लेयर है, बिल्कुल लाइट वेट लेयर है, और इट्स 100% वाटर प्रूफ। उसका फ़ायदा ये है कि विंटर में आप लेयर्स पहन सकते हैं, एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट दीज डेज। पुट लाइट वेट लेयर्स, और लाइट वेट लेयर्स के ऊपर आप एक शेल पहने जो कि आपकी बॉडी हीट को अंदर रख सके, और अंदर के जो आपकी लेयर्स हैं, इंसुलेशन है, उसको वार्म रखे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। ट्रेल सीधा हो तो बंदा चलता रहता है। Trail goes up and down and up and down and up and down. That makes you extremely tired. But that's the beauty. ट्रेल पे आने का मज़ा ही ये है कि ट्रेल में कोई चैलेंज हो आपके लिए। ट्रेल में जब चैलेंज होता है, then you really enjoy it. ट्रेल में अगर कुछ ना हो, then monotonous हो जाता है। Get bored. ओह मैं ये चढ़ाई ना मेरे कड़ाके डाल दिया आज। Oh, I am tired. कुछ अरसे से वो हंटिंग चल रही थी, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे होते। You know, you're going in the forest, sitting in a place, waiting, and that's how you hunt. लेकिन ट्रेल्स पे जाने का मतलब है कि you're covering distance. You're putting miles on yourself. And when you put miles on yourself, that's when you're tested in another way. जब hunt करते हैं, you're tested in another way. But इस तरह आपकी endurance, आपका stamina, you know, weight उठाया हुआ, आपकी हर चीज़ टेस्ट हो रही है। So whatever you're doing in the nature, you're being tested. You're being tested every day, even otherwise. आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो। मुझे तो दूसरे काम ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। सुबह 2 सिंक ब्लॉक हुए थे, बेगम ने ड्यूटी लगाई, मैं वो 2 सिंक पे काम करता रहा about an hour, 40 minutes, 1 hour, and that 40 minutes are probably more difficult for me than 2-3 hours of hike. Maybe it's your priority, it's your passion, what you feel like doing and you enjoy. Plumbing I don't enjoy, hiking I do enjoy. It is so beautiful, so fluffy. Look at that. हम जो चाहे कर लें, नेचर के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। जब तूफ़ान आना है, जब बर्फ़ पड़नी है, जब बारिश होनी है, वो होनी है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ एक्सेप्ट इट, enjoy it. Whatever is thrown at us, just grab it happily and just make use of it. मेरा ये हमेशा से असूल रहा है। अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं, but is you just adapt to the situation, you accept it and move on. May not be easy, but it is never impossible. Look at the magical place. Just me
and the nature. And the adventure of life just continues. It goes on and on and on. And I'm so glad that I'm able to show it to all of my viewers, to everyone. ये वो फॉल के सारे पत्ते गिरे हुए हैं जो कि गिरते रहते हैं और अब ये खाद बन जाएंगे, नेचर का हिस्सा बन जाएंगे. कॉफ़ी टाइम जो मैं वहाँ से टिम हॉर्टन से कॉफ़ी लेकर आया था. Just taking a break here. It's a beautiful place to take a break. मेरे इर्द गिर्द hills हैं and I'm in the valley, in the depression here. And all I can see is tall trees around me and snow falling down. There are a couple of trees I can just sit on these and sip my coffee. Got another thing. I'm carrying some nuts as well with me today, just in case I need it. This is the gimbal that I'm carrying with a microphone on. This is by DJI OM4. I put these seeds for the birds here. Birds can eat it with a view. They get the view anyhow. मैं अब वापसी के रास्ते पे हूँ. It's close to Maghrib time. 5 बजने वाले हैं, 4:30-5 बजने वाले हैं और I think it's gonna take me another 20 minutes पार्किंग तक पहुंचने में. घंटा डेढ़ हो गया मुझे वापस चलते हुए. It's been an awesome outing. Really loving it. लेकिन अंधेरे से पहले मैं यहाँ से बाहर निकल जाना चाहता हूँ कि मेरे पास लाइट वगैरह नहीं है. आज मेरा प्लान नहीं था कि अंधेरे में वापस जाऊँ. So I have no light, no torch whatsoever. I need to get out of the trail before it gets dark. I'll sign out now. शाम हो रही है. I'm just gonna make it quick for the rest of the trail. Thank you very much for being part of this journey and part of the channel. अगर वीडियो पसंद आए please give it a like, give it a thumbs up. And अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, so that I can show you guys nature, the adventures and the world that I travel through. You guys take care. Bye.